दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। 26 फरवरी 2022 को डिगवा डी स्टेडियम में बीसीसीएल, टाटा स्टील और सेल ने संयुक्त रूप से वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस मौके पर बीसीसीएल के सीएमडी श्री समीरन दत्ता, डीटीओपी श्री चंचल गोस्वामी, डीपी श्री PVKRM राव, डीटीपीएनपी श्री संजय कुमार सिंह, डीजीएमएस के डीजी श्री प्रभात कुमार, सेल और टाटा स्टील के अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बीसीसीएल के द्वारा निर्मित शॉर्ट फिल्म माइंड्स टू मार्केट लोगों को दिखाया गया। इसके बाद सीएमडी श्री समीरन दत्ता ने सभा को संबोधित किया। आइए देखते हैं उन्होंने सुरक्षा को लेकर क्या पैगाम दिया। Which is a subsidiary of Coal India Limited, a Maharatna company. I am really delighted to be present here, and why not when three giants like Steel Authority of India Limited, a Maharatna company, pioneer in private sector Tata Steel, and B.C.C.L, a Miniratna company itself and a subsidiary of a Maharatna company, Coal India Limited, joins hands together to organize such a wonderful event. No doubt that is going to be a grand one, particularly with the honorable presence of DGDGMS and his colleagues. The subject matter on which we are having an exhibition today, the safety and the safety procedures that we adopt, it has to be a grand one. At the outset of the safety week, of the safety celebration, I would like to say that yes, as has been already said, that safety is more of a behavioral nature. Of course, technology and other measures are already in place and you are all practicing them. But if at all the lapses take place, the majority of the cases are more from the behavioral point of view. So we will have to make it a habit that we inculcate safety within ourselves, and it starts from the day one we are born. And it doesn't end in minds also, where the safety is of very important one, because the probability of the risk is much higher than in day-to-day life, but when we work in the minds, particularly in the areas where all these companies are working. Amongst S.A.I.L, I would take B.C.C.L is working is the most hazardous environment, where we encounter fire, where we encounter gas, subsidence, what not. So safety is of utmost importance, and the DGMS office as a backbone has truly been a safety keeper, I would say, in keeping the norms and pointing to us wherever there is defaults on our part. I will also thank the safety board members, all these bipartite, tripartite meetings that we could hold this time, and very wonderful suggestions have come through those meetings also. But the suggestions has to be implemented. And in implementation, we will have to increase the vista of technology. We will have to see that the behavioral fatigue doesn't set in. Because once we are going through all those practices years after years, days after days, it's quite natural to human that we try to avoid many of these safety behaviors due to fatigue. We will have to be alert on that. We are aiming for zero harm, but I would say even if there is zero accident, we have to
rather concentrate on near misses, because today's near miss may be an accident tomorrow. So near misses to me is as important as unfortunate accidents. As the records have shown, that all the companies on safety count has been doing well, and there has been gradual decrease in the accidents and all these things. But then we have to keep in mind that there are still near misses. One second, I do not want to stand in between these speeches. I cannot resist myself from hearing from the DGMS. So I do not want to make my speech longish. We have already heard about the measures. We have seen the videos of all the companies, of B.C.C.L also. I do accept the suggestion made by Chitarwar Saab regarding the women, more deployment of women employees, particularly in underground mines also. We have seen how Tata Steel is doing. We do keep it in mind, and we'll emphasize on that, and we will take it up with S.A.I.L also. We have women employees, even we have shovel operators and women shovel operators, but in B.C.C.L the number is less, so we will keep it in mind. So with that, I'd like to thank you all and congratulate the winners once again, and even those who have not won, that they have participated. We saw very beautiful stalls. The stalls were wonderful and very educative. The demos were very educative. So thank you all. Jai Hind, Jai Suraksha. Other subsidiaries had dropped it, but we had a regular conversation, and ultimately we decided that we will be organizing the safety week function, safety week from 7th to 12th of February, and that COVID didn't disturb us, and we could do it in a proper manner and a festive manner. Again for this function, we jointly requested DG Saab to be the chief guest of this function. There was some Amrut Mahotsav program from the ministry with DGMS, but that was postponed and we could get the time of DG Saab. So we are organizing here, and I feel that it has been completed in a befitting manner, and I sincerely thank DGMS, Tata Steel and S.A.I.L for this function. Working of mines keeping a very high safety standard has always been preferred ahead of other activities, and to strengthen the safety standards in B.C.C.L. But as I have seen over my 3 years of time, it has always been stressed to maintain the safety standard of mines as per statutory provisions through regular follow-up, monitoring, inspection of mines, and ensuring that any safety directives from received from S.A.I.L and DGMS are implemented by mines in true spirit. There has been considerable decrease in fatal accidents in the last 5 years. However, unfortunately, there is one fatal accident took place at Rajapur recently and Bastakolari on 20th February. But there has been considerable decrease in the serious accidents also. In order to achieve the target of zero harm potential, B.C.C.L has taken a number of initiatives to achieve this target religiously. Some of these initiatives are conducting safety audit 21-22 of all the mines, the area level tripartite safety committee meetings, the company level bipartite safety meeting,
and inspection of different areas have been completed as per schedule for 21-22. Personal health counseling and medical checkup of both departmental and contractual employees of the age group 51 to 60 years most prone to accidents. Regularly by different areas, distribution of SOPs framed by High Power Committee of S.A.I.L for contractual operators. Among the operators of IR patches, periodic review of emergency response plan and safety management plan of different mines. Conducting the mock drills on various hazards arising due to fire, inundation, explosion, dump slope stability, inspection of mines by ISO officials on regular basis, making available the PPEs such as mining shoes, gumboot, helmets, sufficient quantities, impart quality training to workmen at BTCs. And in this regard, it has been planned to upgrade Borora and Unity BTC as a center of excellence in the next year 22-23 as per project report prepared by the holding company S.A.I.L. Also, video claims of the past accidents depicting the reason of accident, preventive measures to be taken to prevent recurrence of some similar type of accidents in future and SOPs to be followed in such type of cases are being prepared by B.C.C.L and shared amongst the departmental and the contractual departments to enhance the safety standards and also the awarenesses. At the last, I would like to conclude my speech by once again reiterating that all efforts are being made by B.C.C.L to achieve zero harm potential and all safety precautions including availability of safety gadgets and PPEs are being ensured in sufficient quantity, and it has been also ensured that sufficient fund is always made available to meet any safety expenditures. I'd like to thank my different forums and bodies of B.C.C.L, union representatives and other management participation in the safety matters which have been actively participating with us with the management for promoting safety and improvement in the standards of the safety. I thank you all. Jai Suraksha, Jai B.C.C.L. Thank you so much, sir. आज का दिन हम लोग सुरक्षा सप्ताह के पारितोषिक वितरण के दिन के रूप में और समापन समारोह के दिन के रूप में मनाते हैं। एक परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इसका फायदा हम लोगों ने देखा है। खान सुरक्षा महानिदेशालय में रह के हम लोग बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कि इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी सवाल उठते हैं अलग अलग कोने से कि क्या हमें क्या मिलता है इससे, लेकिन अगर हम सुरक्षा के मापदंड में भारत में जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसमें देखें कि सुरक्षा सप्ताह मनाने का योगदान है अभी भी। ये हमारे सुरक्षा के स्तर को अभी भी ऊंचा करते आ रहा है और एक महत्वपूर्ण टूल है आज की तारीख में भी। खान सुरक्षा महानिदेशालय में रख के हम देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग हमारे जो अधिकारीगण हैं या हम लोग जो जाते हैं तो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि पिछले 120 साल से खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जो जर्नी शुरू करी है, जो जो पड़ाव हम पाए हैं, जो जो चीज़ों हमने देखा है, अब क्या हमारा वो जो दिशा है या सही दिशा में अभी हम चल रहे हैं, इसके लिए हम सतत सभी लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं। जितने माइंड ऑपरेटर्स हैं, जितने हमारे कर्मचारी बंधु हैं, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनसे लगातार हमारा वार्तालाप होते रहता है। बीच में हमने एक शुरुआत करी थी 2019-20 में कि यूनियन रिप्रेजेंटेटिव से अलग से एक बात करने की मीटिंग करनी थी। ये किसी कारण से कोरोना आने के कारण हम नहीं कर पाए उसके आगे। अभी अगर कोरोना हमें परमिट करता है, उम्मीद करते हैं कि अब जिन तक जो कोरोना का वेव था खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें समय मिलेगा तो हम उसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे यूनियन एंड डीजीएमएस के बीच में बाइपार्टाइट मीटिंग, जो कि रुक गया किसी कारण से। बाकी मैनेजमेंट या ऑपरेटर्स के साथ जो मीटिंग होती है उसमें सुरक्षा को मापदंड को लेकर कहाँ कम पड़ रहा है ये वार्ता होती है और ये हम निचोड़ निकालते हैं कहाँ हमसे चूक हो रही है या कहाँ हमें और स्ट्रॉन्ग होना है, कहाँ क्या हमारा वीकनेस है, क्या लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो दिया हुआ है, जो बना हुआ है सफिशिएंट है कि नहीं, उस पर भी हमेशा गहन चर्चा होती रहती है। और इस प्रोविजंस को देखते हुए हमने
कोड बनाया नया, जो रेगुलेशंस है वो नए बन रहे हैं, उस पर बनने के बाद सबसे आप लोग का ओपिनियन लिया जाएगा। तो अनुरोध है कि आप लोग अपने ओपिनियन स्ट्रांगली दीजिए, जो भी बोलना चाहते हैं स्ट्रांगली बोलिए, ताकि जो आने वाले समय में हमारा लेजिस्लेटिव प्रोविजन है वो हम अच्छी तरह लागू कर सकें, अच्छी तरह एडॉप्ट कर सकें। एक तो प्रोविजन बनाना है, दूसरा एडॉप्ट करना है। हमें सिर्फ प्रोविजन बना के ऐसा नहीं छोड़ना है कि जिसको एडॉप्टेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो, उस पर भी ध्यान देना है। तो हम सतत प्रयास में है कि कैसे फर्दर सुधार लाया जा सके। आप सभी लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। ये जो फंक्शन है इसमें टाटा स्टील की माइंस है, B.C.C.L की माइंस है, S.A.I.L की माइंस है, ये सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमें हमारे DGMS की तरफ से ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती है। जो दिशा निर्देश हमें रेगुलेशन से, एक्ट से मिलते हैं, वो बोलते हैं इनको भाई इनको करिए, ये आप मार्गदर्शन करिए बाकी लोग से। हमारा प्रयास रहता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे कैसे हम सुरक्षा के मापदंड को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर से अपेक्षा ये की जाती है कि जो सुरक्षा के मापदंड रेगुलेशन से बनाए गए वो मिनिमम है, आपको उनके ऊपर जाना है। आप पक्ष को आगे बढ़ाइए, बताइए दूसरों को उससे बढ़िया क्या किया जा सकता है। ये मापदंड आप पालन करते हुए आगे बढ़ा के दूसरों को दिखाना है। हमारी जो अभी पिछले 1-2 साल से जो हमने अपने कार्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया है वो ये है कि पहले जैसे हम इंस्पेक्शन के लिए जाते थे माइंस में, अब इंस्पेक्शन के साथ हम लोग सुरक्षा संबंधी वार्तालाप भी करते हैं, सुरक्षा संबंधी आयोजन भी करते हैं, ताकि हमें सुरक्षा का जो प्रचार प्रसार है, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसको हम कैसे भी करके आगे बढ़ा रहे, ताकि हम देखें कि फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है।